Hello students, hello, welcome to Unacademy YouTube class. तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स इज so we will talk about tissues, okay, right? So tissues part 1 आज का टॉपिक, okay, right? And देखो, this is basically the NSEJS IJSO series, okay, and we will be discussing about tissues part 1. और यहाँ पे स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक्स और इसका हाईलाइट्स विल टॉक अबाउट, ओके, राइट, है ना? विल टॉक अबाउट हाईलाइट्स, सो जिससे क्योंकि इट्स देखो यहाँ पे इट्स हाफ एन आवर का क्लास, सो यहाँ पे जितना हो सके वी विल एक्चुअली कवर ऑल द हाईलाइट्स एंड द मेन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना? तो इससे स्टूडेंट्स का हेल्प होगा टू गेट सम आइडिया अबाउट दिस चैप्टर्स एंड इट विल हेल्प देम इन दीज एग्जाम्स, ओके. तो पहले वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट एट अनअकैडमी, जो है द कॉम्बैट साइंस ओलंपियाड, ओके. देखो, ये कॉम्बैट साइंस ओलंपियाड 26 दिसंबर 1 PM को होने वाला है, ओके. एंड ये जो एग्जाम है इट इज 60 मिनट्स एग्जाम एंड देखो 45 क्वेश्चंस है देयर. बहुत इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 मेडल्स, लाइक स्टूडेंट्स कैन गेट रैंक 1 को गोल्ड मेडल मिलेगा, उसके साथ मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा. उसके बाद देखो रैंक 2 सिल्वर विल गेट ऑल्सो मेरिट सर्टिफिकेट्स, ओके, एंड रैंक 3 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आर ऑल्सो देयर, ओके, ओके. तो एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे you also have the option of the reward worth of 10 lakh rupees is there, okay, and rank 1 to 3 will get 100% scholarship, 4 to 10 will get 75% scholarship, 11 to 50 will get 50% scholarship, and 51 to 100 will get 25% scholarship, okay. So very very important, okay, don't miss this. Enroll for the combat exam जो 26 December 1 PM को होने वाला है. मेडल्स मिलने वाला है, ओके, स्कॉलरशिप मिलने वाला है, all these things are there. A little bit about the plus program. Unacademy में there are actually 2 programs. We have the free classes, okay, ये जो YouTube classes and the special classes, ये सारी चीज़ free है. But students देखो, plus program if you join you will get all the events happening, okay, live classes, test series, unlimited practice, structured schedule, okay, ये सारे important things plus class में होगा. And as an educator I provide full notes, पूरा के पूरा full notes of 9-10 biology chapters and almost every like 12 chapters of 9-10 उसका full notes मिल जाएगा, okay students, and live classes, okay. So plus is far better than the free classes. And students always use my referral code, okay, always use my referral code which is actually Swarnava Roy. इसको use करना, इससे you will get 10% off, okay. ये बहुत important है. There is another actually option called the iconic package, and ये iconic package में plus का सारे features are there. In addition you have these kind of personal coaching, main Q&A, उसके बाद study planner and expert guidelines, okay. So all these things are there. 2 options, 24 months and 12 months का option है. Again use my referral code Swarnava to get 10% off, okay, right. So iconic package में और भी extra there is actually personal coaching का option है, okay, right. So keep this thing in mind. With that information, finally student, this is actually my देखो यहाँ पे my telegram channel. तो इस telegram channel को do keep in mind students, ये बहुत ही important, my telegram channel, and this is my referral code, okay, जिसके लिए इसको use करने से जो भी देखो फीस है उस पर 10% ऑफ, ओके, राइट. एंड एवरी स्लाइड के नीचे में कोने में यू विल सी माय रेफरल कोड Swarnava, ओके. सो वॉच आउट फॉर दैट. सो विद दैट वी विल स्टार्ट आज का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज टिश्यूज, ओके. सो विल स्टार्ट टिश्यूज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट टिश्यूज. व्हाट इज टिश्यूज? देखो, टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, बहुत important, similar in structure, and that work together to perform a particular function. So देखो, एक concept है, we have single cells, okay, right. So either we have single cells, okay, और single cells जब एक साथ मिल जाता है then we have tissues. So we have either the cells, okay, right,
है ना, सिंगल सेल्स एंड सिंगल सेल, सो इसको सेल होगा, ये सिंगल सेल जब दे फॉर्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सो व्हेन वी से ग्रुप ऑफ सिमिलर cells, है ना, having the similar function, है ना, having the similar function, तब देखो it becomes a tissue, then it becomes a tissue, right, है ना, okay. So tissue is comprised of cells that have a common origin, ये बहुत ही important है, ये tissue का जो origin, यानी कि when during embryonic development, students, okay, during embryonic development देखो we have different kind of body का देखो layers are there, we know there are ectoderm, endoderm, mesoderm, है ना, right, है ना, देखो we are triploblastic, we are triploblastic animals, है ना, right, humans, mammals, we are all triploblastic. So यहाँ पे देखो we have the endoderm, है ना, we have the middle mesoderm and we have the ectoderm, है ना, देखो 3 layers are there. तो ये 3 layers से body का different parts are formed, okay, right, बहुत different parts of the body are formed. So जैसे I'll give an example कि nerve cells are formed from the all the nerve tissue are formed from the ectoderm. So basically nerve cells, they are actually उसका देखो all the nerve cells का देखो एक common origin which is basically the ectoderm, है ना, right. So इसका एक so this whole concept that tissues comprise of cells with similar functions and common origin, ये बहुत ही important है this word common origin, है ना, टिश्यू होने के लिए उसका देखो origin, that means जिस embryonic cell से they are coming, it has to be a common. देखो यहाँ पे I'll give an example के ये हो गया हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का, देखो we have ectoderm, endoderm which is the inside layer, है ना, ऐसे होता है ना, endoderm, उसके बाद देखो mesoderm और यहाँ पे बाहर में we have the ectoderm, okay, so ये हो गया ectoderm, okay, है ना, ये हो गया देखो diversity में it is this thing, this is actually this middle part is called the middle layer को we can call the mesodermal layer, है ना, so basically this part is called the mesoderm, okay, so this is the mesoderm, okay, right, and finally students we have the एकदम inside में where we have the digestive tract, देखो इसको I am drawing like this, okay, so basically the alimentary canal, है ना, right, so this is basically the endoderm, this becomes the endoderm, है ना, so और ये तीनों मिलके we call the triploblastic, है ना, triploblastic, okay. तो what you see here कि ये जो ectoderm, इस ectoderm से देखो कैसे from the ectodermal layer how the nervous tissue is coming out, है ना, so basically all the nerve cells, all the nerve fibers, okay, they have a common origin, so all the nerve fibers, okay, so nerve is a type of tissue, है ना, right, nervous cells they form a tissue, the nervous tissue, okay, so all the nerve fibers they have a common origin and उसका common origin is the ectoderm. It's an example, जैसे students यहाँ पे देखो endoderm से we have the thyroid cells, digestive cells, mesoderm से देखो cardiac cells are coming, skeletal muscles are coming, okay, so these tissues they have a common origin, है ना, ये tissue का एक important characteristics है, okay. So देखो this is basically nerve tissue I'm talking about, कैसे देखो nerve tissue, it has the cell body and इसका देखो dendroids are there and then we have the axon, okay, right, so it's very important, okay. This is how the nervous tissue looks like, it's a elongated elongated tissue, है ना, right, देखो यहाँ पे कैसे this is the nucleus of the cell body, okay, right, है ना, this could be also called the cyton, okay, right, cell body is also called the cyton, okay. So एक चीज students we have to understand in tissues के when we are studying tissue, students, one thing is very important, we have to know about the unicellular cells. देखो जो unicellular cells होते हैं उसका कोई tissue का concept नहीं है ना, so like amoeba, like paramecium, so these are all the unicellular eukaryotes, है ना, right, so they are the unicellular eukaryotes, जिसको we also call the protists, okay, right, so they are basically the unicellular eukaryotes, okay, eukaryotes which are also called the protists, है ना, right, और देखो यहाँ पे students ये जो protists they are unicellular, इसीलिए यहाँ पे there is no concept of tissue formation, है ना, so there is no tissue formation, single cell in the body, okay, right, which means that all basic life activities, ये बहुत ही important है, all basic life activities, इसको कैसे I am making a box, okay, they are performed by a
single cell. All basic life activities are performed by a single cell, है ना, right? So यानी कि in amoeba intake of food, है ना, intake of food, intake of respiratory gases जैसे कार्बन ऑक्सीजन, है ना, right? Movement of the cell, intracellular digestion, metabolism, respiration, osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि कितना पानी भीतर आ रहा है, कितना पानी लिविंग. ओके, ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, बैलेंस बिटवीन द वाटर एंड द सॉल्ट, बैलेंस बिटवीन वाटर, ओके, है ना, एंड द मिनरल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट. सो ऑस्मोरेगुलेशन ऑल्सो देखो कि एमीबा कहाँ पे रह रहा है ना, वेयर इट इज स्टेइंग इन द एनवायरनमेंट, उसका सराउंडिंग इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, उसके हिसाब से दे रेगुलेट द वाटर एंट्री, है ना, राइट. सो ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग, ये सारे के सारे, है ना, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, उसके बाद देखो इंटरसेलुलर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे इज डन बाय अ सिंगल सेल ऑफ एमीबा. सिंगल सेल of amoeba, यानी कि one single cell is carrying out all the activities, हाँ, right. So यहाँ पे there is no concept of tissue in case of amoeba, but when you go to, so देखो this is amoeba, इसका कोई shape नहीं है, this is a paramecium, okay, it has a rigid shape, है ना. So one cell carrying out everything, and देखो यहाँ पे I said के the contractile vacuole, it carries out the osmo regulation. Okay, very very important. Very important actually activity of so this is the osmo regulation. Okay, this is the contractile vacuole. Okay, and as you can see students के but when you go to the multicellular cells, यहाँ पे देखो there is a concept of division of labor, very important, division of labor and the concept of tissue formation, very important. Okay, so ये division of labor का मतलब क्या है कि however there are millions of cells in the multicellular organism. Yes, humans में there are trillions of cells, है ना, right. Only few functions are efficiently carried out by most of these cells, है ना, यानी कि देखो हर सेल का only a limited function they carry out. Okay, thus they are specialized. Okay, and for their specific function, they are specialized for their specific function. Let's say we can talk about kidneys, right. For example, in human beings, contraction and relaxation of the muscle cells are cause movements of the body parts. So muscle cells ka main function is contraction, relaxation. Okay, so when we talk about muscle cells, we talk about these kind of the skeletal muscles. Okay, right, and skeletal muscles, or because the skeletal muscles are striated. Okay, so they are just striated, है ना, they are striated, है ना. तो यहाँ पे ऐसे देखो myofibrils का striation होता है, right. So we'll take a section of skeletal muscle, students, you can see there are kind of striations like that. Okay, like striated muscle like that. Okay, इसका देखो many there are different kinds of nucleus present. Okay, so we'll talk about these things later, है ना, right. तो इसमें देखो बहुत सारे mitochondria होता है. So these skeletal muscles, their function is contraction, है ना, जैसे हमारे biceps, triceps, okay, triceps, है ना, उसके बाद देखो biceps. So इसका function is contraction, relaxation, और इसके कारण बॉडी मूवमेंट्स भी होता है, राइट. सो दैट इज देयर टिपिकल फंक्शन. स्केलेटल मसल्स का फंक्शन इज नॉट रेस्पिरेशन, है ना. सो दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन, उसके लिए अलग सा सेल्स आर देयर. मैसेजेस आर कैरिड बाय नर्व सेल्स. अभी नर्व सेल्स का फंक्शन इज टू कैरी द स्टिमुलस, राइट, है ना. उसके बाद देखो ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ब्लड इज कनेक्टेड टिश्यू, उसका फंक्शन इज टू एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, है ना. ब्लड के बिना वी कांट लिव, है ना, क्योंकि ब्लड इज टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स. उसके बाद देखो उसको इट इज स्प्रेडिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कोने में इट इज बीइंग स्प्रेड. उसके बाद देखो फूड, हार्मोन्स, ऑल दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म टू द किडनीज, है ना, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, है ना, all these kind of products. Okay, so देखो हर different kind of organs का देखो कैसे specific function होता है, right. So that is called the division of labor. Compared to amoeba में what do we see, paramecium में what do we see, कि वहाँ पे division of labor का कोई concept नहीं है. वहाँ पे everything is being carried by the amoeba and the paramecium, है ना. But in multicellular organisms we have a tissue का concept, that is tissue is actually made up of equal same kind of cells, है ना, having the same origin, और देखो एक specialized function they are carrying. Okay, so what happens is cells, है ना, cells, बहुत सारे cells they actually
बहुत सारे cells they form tissues. बहुत सारे tissues they actually form organ, right? And बहुत सारे organs they form the organ system, है ना? They form the organ system, है ना? देखो this is the hierarchy, है ना? Hierarchy यानी कि cell से so basically cells forming the tissues. What kind of tissues are we talking about? We are talking about the nervous tissues, है ना? We are talking about the nervous tissues, okay? उसके बाद देखो we are talking about the muscular tissues, है ना? Skeletal muscles, cardiac muscles, okay? Nervous tissue, muscular tissues. उसके बाद देखो we have the connective tissue, connective tissues, okay? Areolar connective tissues, okay? Adipose tissues, okay? All these वगैरह वगैरह different kind of tissues. उसके बाद देखो organs में we have heart, lungs, okay, right? Kidneys, है ना? Right? All these things are there. उसके बाद देखो finally organ system में we have the digestive system. कितने सारे organs मिलके the digestive system. Digestive system में देखो how many different kind of organs are there. We have stomach, we have small intestine, okay, right, है ना? So esophagus, the digestive system becomes the organ system, है ना? उसके बाद देखो respiratory system. इसमें देखो how many different kinds of respiratory system has so many different kinds of organs together forming the respiratory system, okay? So right, इसको देखो backwards when we go, organ systems are made up of organs, organs are made up of tissues, tissues are made up of cells, है ना? So this is something इसको we have to remember. उसके बाद students we go to that plants में भी देखो, not only animals, even in plants we have tissues, okay, right? यानी कि similar kind of cells having a specific function. जैसे we have phloem, right? ये phloem जो है tissue, okay, it's we can call, देखो बाद में we'll study, it's kind actually it's a complex permanent tissue. Complex यानी कि phloem is made up of different kind of components, okay, right? And it conducts food from the leaves. ये बहुत ही important. It conducts food from the leaves, okay, to other parts of the plant. And it also kind of, we have xylem carries water and minerals, okay, right? So phloem conducts food. ये food कहाँ पे बनता है? Leaf में बनता है because of due to the process of photosynthesis. Okay, so due to the process of photosynthesis, students, okay, this यहाँ पे food बनता है, and this food actually in the form of sucrose. In the form of sucrose is now transported from the leaves, okay, to the different parts of the plant. इसको we call the process of translocation. Translocation यानी कि it's a process of transport of food, okay, to different parts of the plant via phloem. ये phloem is a complex permanent tissue. Xylem क्या करता है? Xylem का role is transport of water and minerals, and this is called ascent of sap. Ascent of sap. Okay, इसको we call ascent of sap. Okay, so the cells with specific function they group together. Cells with specific function they group together and form a tissue. Okay, जैसे blood, phloem, muscles are all examples of tissue. So plants में students, plants में tissue का example is xylem and phloem. Okay, right, which conducts the xylem conducts the water and minerals. Okay, देखो कैसे root से water and mineral को लेके पूरा plant body में spreading. Okay, and कैसे we have the phloem actually जो leaves में जो food बनता है, okay, right, due to photosynthesis, उसको कैसे the phloem is transporting to the different parts of the body. Coming to the 4 types of tissues, देखो यहाँ पे body में connective tissues, epithelial tissues, muscle tissues, okay, nervous tissues, okay, different kind of tissues are there. And देखो यहाँ पे this is कैसे देखो this is xylem, कैसे water and minerals is conducting, and कैसे phloem is conducting food. देखो यहाँ पे कैसे sucrose is getting transferred, okay, from the companion cells into the sieve tubes, and इसके बारे में again details में we'll study, okay, in this chapter. Some history, अभी थोड़ा सा history we will study, okay, देखो in IJSO, in NSEJS, okay.
all these exams, okay, थोड़ा सा extra web study. तो history of the tissue research में देखो first person Marcello Malpighi in 1628 and 1694 देखो during this time is called the founder of histology. Histology is basically study of tissues, okay, histology, study of tissues. Okay, first time देखो this scientist Marcello Malpighi, okay, he started actually studying tissues, okay, and देखो the father of the histology is called Mary Francis Xavier Picard, okay. Mary Francis Xavier Picard is called the father of the histology, okay, that means study of tissues. और देखो यहाँ पे Marcello Malpighi is on the founder, okay. So founder से father का contribution ज़्यादा होता है, right? Obviously any field of biology में देखो or any kind of not only biology, okay, कहीं पे भी any father is always having a higher contribution. So this is basically the father. This is the Mary Francis, इसको भी called father of histology, that is tissue का study, and this is the founder of the founder of histology is Marcello Malpighi, okay, right? So ये दोनों scientists actually brought this whole concept of histology. And देखो basically the study of tissues is called histology, okay, right? जिसका नाम Greek histos का मतलब tissues, logos का मतलब study है ना. And ये this Mary Francis Picard, he distinguished 21 types of elementary tissues. 21 types of elementary tissues, okay, for which the organs of human body are composed, okay, right, even without the help of microscope. उस जमाने में he did, okay, right है ना. Alright students, यहाँ पे देखो ये जो term histology, तो उस जमाने में histology was not known, okay. This term was not coined. This term was coined by the scientist Mayer, okay. In 1819 में histology का term was coined, okay. इस time में when Picard was actually working on, at that time the term histology, that is the study of tissues called histology, was not coined. इसका coining हुआ 1819 में by Mayer. Alright, Mayer is a scientist who did that. Onkar, hello. Can I like the video? Yes, 100% Onkar, definitely. देखो ये this is actually these are free classes which are done by Unacademy, और इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, है ना, and please attend all my classes. Onkar, इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि this is all free, है ना, right? It is all free, so and you can get lot of knowledges from these kind of lectures, है ना. और इससे देखो you will also get idea how Unacademy teachers they teach, है ना. And you can also join the plus program, okay, उससे बहुत फायदा होगा. You will get all my notes, okay, right? So Onkar, keep watching my YouTube lectures, okay. Anyway, उसके बाद स्टूडेंट्स भी टॉक अबाउट कि इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज में देखो द टिश्यू फॉर्मेशन ब्रिंग्स लेबर, डिविजन ऑफ लेबर. अभी आई सेड के division of labor, that means different tissues have different kind of functions, okay. So they bring division of labor in multicellular organisms, okay. देखो multicellular organisms are made up of trillions of cells. यहाँ पे specialized function is very very important, है ना, right? Like and देखो unlike amoeba in paramecium जहाँ पे एक ही cell all the work is doing, but ऐसा नहीं होता है. In multicellular cells there has to be a division of labor, otherwise multicellular organisms they cannot function, okay. Coming to देखो organs are organized form of tissues. अभी देखो I gave the entire flow chart कैसे देखो cells forming tissues, tissues forming organs, okay, right? So organs are organized form of tissues, and these organs then form organ system, okay, right? ना? So due to the origin of the tissues, the workload of individual cell has decreased. ये बहुत ही important है. This is very very important. Due to the origin of tissues, workload of an individual cell has decreased because अभी एक individual cell का सिर्फ एक particular function है ना. जैसे जैसे I give an example, देखो people who work in the military, उसका function is to देश को देखो प्रोटेक्ट आवर कंट्री, है ना, उसको है ना, देश का सुरक्षा दो. सो पीपल हु आर वर्किंग एज डॉक्टर्स, उसका काम इज एक्चुअली टू लुक आफ्टर द सिक पीपल, है ना, राइट. पीपल हु आर इंजीनियर्स, उसका काम इज टू बिल्ड एक्चुअली हाउसेज, है ना, राइट. एंड पीपल हु आर टीचर्स, वी टीच स्टूडेंट्स, है ना. तो देखो हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, है ना, हर जॉब का देखो एक सेपरेट कैसे फंक्शन है, राइट, है ना. ऑब्वियसली अ टीचर कैन गो एंड फाइट लाइक अ सोल्जर कैन नॉट कम एंड टीच लाइक अ टीचर, है ना. एंड द सेम थिंग डॉक्टर कैन नॉट बी लाइक इंजीनियर. सो हर एवरीबडी स्पेशलाइज्ड फॉर देयर फंक्शन, ओके. सो दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली, है ना, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन के ऊपर वर्कलोड कम हो रहा है.
अगर सोचो कि डॉक्टर हैज टू नाउ गो एंड डिफेंड द कंट्री, है ना, राइट, डॉक्टर भाई आप जाके अभी डिफेंड करो इंडिया को, है ना, राइट, तो ऐसा तो नहीं होता है, राइट, सो डॉक्टर कैन नॉट डू सोल्जर का काम, डॉक्टर कैन नॉट डू इंजीनियर का काम, डॉक्टर कैन नॉट डू टीचर का काम, है ना, राइट, सो एवरीबडीज वर्क इज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड, इससे सबका देखो अल्टीमेटली प्रेशर नहीं होता है, राइट, द वर्क लोड इज एक्चुअली डिक्रीज बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन. सेम कॉन्सेप्ट विद टिश्यूज, ओके, बॉडी में टिश्यू होने के कारण डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रोल. सो दैट्स बिकॉज ऑफ द improved organization and higher efficiency, the survival of multicellular organisms is higher compared to the unicellular organisms. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, because multicellular organisms में ये स्पेशलाइजेशन है, ओके, सो दिस गिव्स हायर एफिशिएंसी, है ना, दैट मीन्स ऑल द मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में, इट इज मच हायर एफिशिएंसी. हायर एफिशिएंसी का मतलब दैट वी फंक्शन, देखो, वी आर मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब आई गिव एन एग्जांपल. सोचो कि एक न्यू विंडोज आई कोर, कंपेयर दैट विद पुराना, देखो, जो पेंटियम था, है ना, राइट, पुराना जमाने का पेंटियम. सो नाउ देखो, लेट्स से विंडोज 95, है ना, 95 स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड अबाउट विंडोज 95? एंड नाउ द रीसेंट विंडोज इज हाउ मच एफिशिएंट, है ना, हाउ फास्ट इट वर्क्स, है ना, राइट, है ना, तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी. सो टिश्यू सिस्टम होने के कारण आवर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मच मोर एफिशिएंट, है ना, राइट, देन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देखो वहां पे एवरीथिंग इज वेरी स्लो, है ना, राइट, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स विद डिफ्यूजन, है ना. सो इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर हायर, है ना. जैसे देखो, एक ह्यूमन सर्वाइव्स फॉर एक्चुअली 80, 90, 100 years, ओके, सो वी कांट इमेजिन एन एमीबा सर्वाइविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वी कांट इमेजिन अ पैरामीशियम सर्वाइविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी, है ना, बिकॉज ह्यूमंस आर एक्चुअली मल्टीसेलुलर, और ह्यूमंस में देखो टिश्यू सिस्टम है, स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए वी आर वेरी वेरी एफिशिएंट, our lifespan is much longer, है ना, right friends. So that is again another importance of tissues. So importance of tissues are division of labor, importance of tissues are organ formation, organ system formation, okay. टिश्यू के कारण देखो वर्कलोड ऑफ एन इंडिविजुअल सेल कम हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द टिश्यूज बॉडी बिकम्स वेरी हाईली एफिशिएंट, है ना, एंड हमारे लाइफ स्पैन इज मच मोर, सर्वाइवल इज मच मोर कंपेयर्ड टू द यूनिसेलुलर, ओके. अभी देखो, एक इंपॉर्टेंट थिंग, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? प्लांट्स एनिमल्स में क्या सेम काइंड ऑफ टिश्यूज? नो, इट इज नॉट द टिश्यू. प्लांट्स अलग सा है, एनिमल्स अलग सा है, उसमें देखो उसका लाइफस्टाइल अलग सा है, उसका कॉन्सेप्ट अलग सा है, इसलिए प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, ओके, राइट, है ना. सो क्या देखो, प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड दे आर फिक्स. सो प्लांट्स आर स्टेशनरी, यानी कि दे एक ही जगह पे दे रहता है, राइट, प्लांट्स दे डोंट मूव अराउंड, ओके. So plants are stationary and fixed, they don't move, okay, and since they have to be upright, they have large quantities of supportive tissues, है ना, क्योंकि एक ही जगह पे रहना है, right, so they need for their protection. देखो, कोई animals are coming and actually trying to eat them, है ना, कोई देखो storm हो रहा है, उसका कोई shelter में जाने का कोई chance नहीं है ना, so they stay outside, so that why their body is made up of a lot of supportive tissues, they are made up of a lot of dead tissues, okay, right. So supportive tissues are generally has dead cells, है ना, उसमें देखो xylem, है ना, जैसे xylem is actually a dead tissue, sclerenchyma is a dead tissue. Anyway, we'll study about these things. Animals on the other hand, they move around in search of food, in search of mates, in search of shelters, है ना, right. Animals को देखो, they keep on moving around in search of food, mates and shelters, okay, and they consume more energy. Animals में देखो energy more, क्योंकि all the time दौड़ रहा है, भाग रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, so that means they need lot of energy, okay. Tiger has to catch deer, है ना, दौड़ के उसको catch करना है, so उतना आसानी से देखो they don't get the food, okay, right. So there is a lot of energy spending, okay, as compared to plants. So most of these tissues they contain are living tissues. Animal में देखो ऐसे dead tissues नहीं होता है, हम थोड़ी body में dead tissues carry करते हैं, right. We always everything is a living tissues, okay. So इसीलिए देखो, the question is that why plant tissues और animal tissues अलग अलग से होता है, क्योंकि उसका lifestyle अलग सा है, उसका concept अलग सा है, उसको जिसको biology में we call physiology अलग सा है. So another difference between animals and plants is the pattern of growth. Pattern of growth यानी कि the growth in the plants is limited to certain regions. देखो, we will study about meristematic regions in the plant. देखो, plants का कुछ region they keep on growing throughout their lifetime of the plants, okay. जैसे all the time new leaves are coming out, all the time new flowers are coming out. So these are all actually because of the meristematic tissues, है ना. meristematic tissues, meristematic
meristem or meristematic tissues are tissues which divide all, so they divide throughout all throughout the plant life. They all throughout the plant life. Meristematic tissues they divide all throughout the plant life, है ना? So but देखो animals में ऐसा नहीं होता है, right? Animals में there are no kind of cells which keep on dividing throughout the whole life. देखो animals they reach a certain age, उसके बाद देखो उसका growth, animals का growth बंद हो जाता है, है ना? So this is again a kind of difference between plant and animals. कि animals they grow after a certain age. Plants का देखो ऐसा कुछ नहीं है. Plants have certain areas जहाँ पे they can grow throughout. और देखो animals and plants animals are very homogeneous, यानी कि animals में ऐसा नहीं कि body का एक side में there is one kind of tissues, another side में another kind of tissues. Animals में देखो it's kind of more homogeneous, but plants में देखो ऐसे different locations में different kind of tissues. Meristematic tissues कुछ specific जगह पे you will get meristematic tissues. Okay, right? So that's another thing in case of plants. उसके बाद देखो there are some tissues in the plants that divide throughout their life. Right now I said, okay, and these tissues are called the meristematic tissues. Okay, right? So these tissues are localized in certain regions. Okay, localized in certain regions based on their dividing capacity of the tissues. Okay, right? अभी देखो various parts of the tissues can be classified as growing or the meristematic tissues. Okay, right? है ना? And cell growth in animal is more uniform. ऐसा नहीं कि एनिमल का एक पार्ट में ग्रो रहा है, एक पार्ट में नहीं हो रहा है. इट्स अ वेरी यूनिफॉर्म सिस्टम. ओके, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन द एनिमल्स. एनिमल्स में देखो डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग ऐसा कुछ नहीं है. पूरा बॉडी में एक ही काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स आर देयर. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन देखो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर लोकलाइज्ड, यानी कि एक ही जगह पे किडनी होता है, एक जगह पे हार्ट होता है. ओके, एंड देन इवन इन द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में उतना देखो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. प्लांट्स आर नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड एज एनिमल्स. ओके, दस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स the different modes of life pursued by these two major groups of organisms. यानी कि देखो and ये जो tissue distribution lets us know कि कैसे different kind of lifestyle is being followed by these plants and animals. Okay, right? है ना? Particularly different feeding methods, है ना? Right? Animals में देखो कितने सारे different kind of feeding methods are there. Also, there are differently adapted for sedentary existence on the land. जैसे plants उसका adaptation is sedentary existence, यानी कि sedentary का मतलब एक जगह पे they are playing. Okay, right? And animals are adapted for active locomotion. Okay, right? है ना? Contributing to this different organs and this different design. Clear? तो यहाँ पे देखो students, again we have comparison box. आज we'll finish this and end this. देखो plant tissues and animal tissues में अंतर is, so plants these are more dead. There are more dead supportive tissues than living tissues. Living tissues are more abundant than dead tissues. Okay, animals. Okay, maintenance energy required is less in plants. Okay, but more maintenance energy is required in animals. Plant tissues are classified as meristematic tissues and permanent tissues. Okay, based on their dividing capacity. But such differentiation is absent in animals. Animals में ऐसा कुछ नहीं है. There are some meristematic tissue जैसा कोई concept नहीं है जो for her life throughout the life they can keep on dividing. ऐसा नहीं होता है. Right? Plants they continue to grow throughout their life due to the presence of meristematic tissues. Animals after reaching maturity do not usually show growth. However, reparative growth is present. यानी कि animals after they reach maturity उसका देखो reparative growth होता है, यानी कि अगर कोई डैमेज हो गया उसका रिपेयर होगा. बट ऐसा नहीं है कि animals will keep on dividing, keep on growing. Okay, it's only in the plants. They keep on giving flowers, keep on giving out branches. Okay, right? So plant tissues are organized in a simple manner. Animal tissues organization is very complex. है ना? देखो कितना nervous system है ना, right? कितना complex animal tissues. Okay, right? We have different kind of tissues, epithelial tissues, वगैरह वगैरह. Okay, right? With the presence of specialized organs and special organ systems, plant tissue is organized based on stationary nature. Animal tissue takes place in the concentration the high mobility. Plants में stationary, यहाँ पे high mobility का concept. Okay, तो students आज देखो ये half an hour का classes, so we'll stop. From next part we will do plant tissues, उसके बाद we'll do animal tissues. Okay, in part 2, right? So in these kind of YouTube lecture students, I will just give actually the highlights of the topics. Okay, so next class में we'll do little bit of plant tissues. वहाँ पे we'll learn about complex plant tissues, simple plant tissues, है ना? Right? तो ये पूरा
प्लांट टिश्यू का ये जो थिंग, राइट, दिस एंटायर क्लासिफिकेशन विल ट्राई टू स्टडी. उसके बाद थोड़ा सा विल टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यूज. ओके स्टूडेंट्स, सो विद दैट आज we will stop. It's more than half an hour. Okay, I've taught again. Sir, question please. Anish is asking question. MCQ questions, Anish. MCQ questions. एक MCQ question I can give from NSEJS, है ना, right? How about one NSEJS MCQ question? जल्दी से देखो, we'll do it, okay? है ना? तो देखते हैं एक one small MCQ question we'll do. In an experimental setup, certain pathogen caused a disease in primates. In an experimental setup, certain pathogen caused a disease in primates with nasal congestion, sore throat, and fever being common symptoms. Okay, right? है ना? Are you reading the question, Anish? उसके बाद देखो, the scientist injected an extract from a blue-green mold as the first line of action. तो क्या हुआ वहाँ पे, एक प्राइमेट को देखो एक इन्फेक्शन हुआ है, राइट, एंड दैट इन्फेक्शन कॉजेज नेसल कंजेशन, सोर थ्रोट एंड फीवर. ओके राइट, साइंटिस्ट इंजेक्टेड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ब्लू ग्रीन मोल्ड as the first line of action. क्या हो गया अभी? However, the symptoms did not subside. ये blue green mold का इंजेक्शन देने के बाद भी symptoms did not subside. Possible causative agents of the disease were listed out. Possible causative agent. किस कारण this disease happened? Okay. First option is it's a virus के कारण. Second option एक fungus के कारण. Third option is a conjugation deficient bacteria के कारण. Fourth option is a tapeworm. Okay, right? So Anish is thinking D. That means it is caused by bacteria. That's what you think, Anish? Okay. Actually, the answer is A. Is the answer. Actual answer is A. यानी कि virus and fungus. Why virus and fungus, Anish? Let me explain. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि the pathogen causes nasal congestion, sore throat, okay, fever. All these actually indicate, है ना, fever, nasal congestion. देखो, it can be a viral disease, है ना, right? Sir, can you give notes of lecture? Grishida says hello. हाँ, yes, Anish, मेरा plus class में I give full notes and do attend my special classes, Anish. वहाँ पे you will also get notes, है ना. मेरा जो free special classes होता है, do attend that. Please follow me. कम टू अनअकैडमी, सर्च माय नेम स्वर्णवा रॉय, है ना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, उसको ज्वाइन करो. आई एम डूइंग डाइवर्सिटी नाउ, सो ज्वाइन माय फ्री क्लासेस एंड वॉच माय यूट्यूब क्लासेस, अनिश. एंड सबसे अच्छा होगा इफ यू कैन ज्वाइन माय प्लस क्लासेस. इफ यू ज्वाइन द प्लस प्रोग्राम, तब देखो इट इज वेरी वेरी गुड. एंड ऑलवेज यूज माय रेफरल कोड स्वर्णवा. प्लस क्लास इफ यू ज्वाइन यू विल गेट द एंटायर पैकेज, है ना, पूरा के पूरा 12 क्लासेस, ओके, 12 चैप्टर्स ऑफ क्लास 9 and 10. NTSE, KVPI, okay, NSEJS, सारे formats I teach, है ना, right? So don't miss that, Anish. Alright, anyway, ये question में क्यों the answer is virus and fungus? Because देखो यहाँ पे symptoms देख के तो पहले viral infection लगता है, number one. उसके बाद देखो scientists gave an extract of blue green mold. What is a blue green mold? It is looking like a penicillin, Penicillium notatum. ये फंगस का देखो एक्सट्रैक्ट दिया, राइट, है ना. ये पेनिसिलियम नोटाटाम से क्या मिलता है? पेनिसिलिन इज गिवन, इट्स एन एंटीबायोटिक, है ना. सो एंटीबायोटिक इज गिवन, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ, सिम्टम्स डिड नॉट सबसाइड, राइट अनिश, आर यू वाचिंग दिस? सिम्टम्स डिड नॉट सबसाइड, इसका मतलब है इट कैनॉट बी अ बैक्टीरियम. एंड देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम, दैट इज दिस बैक्टीरिया कैन नेवर बिकम रेजिस्टेंट, राइट, नॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, है ना, नॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे टेपवर्म आल्सो कैन बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, पता है ना. यस सर, अनदर IGS क्वेश्चन प्लीज. अनिश देखो हाफ एन आवर का क्लास है, आई हैव गॉन बियॉन्ड दैट. Join me in the next class, okay, right? Keep following my YouTube lectures, Anish. तो अभी right, आज I have gone over my time already. देखो 10 मिनट ज़्यादा I have taught, okay, है ना.
तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू दिस. डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? सो दिस क्वेश्चन में देखो ओनली वायरस एंड फंगस कैन बी, बिकॉज देखो फंगस कैनॉट किल अ फंगस, है ना, पेनिसिलियम कैनॉट किल अ फंगस, है ना, तो यहाँ पे फंगस एंड वायरस का ही ऑप्शन है, राइट, बिकॉज द सिम्टम्स डिड नॉट सबसाइड. ओके, राइट. और यहाँ पे देखो आई हैव गिवन की डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट किल द टेपवर्म. सो टेपवर्म्स आर किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स लाइक द यहाँ पे देखो द प्राजीक्वांटेल, उसके बाद देखो एल्बेंजा जिसको कहते हैं, उसके बाद देखो द नीटा जोसैक्साइड, जिसको कहते हैं एलिनिया कहते हैं. ओके, सो नीटा जोसैक्साइड, can't pronounce, okay, right? Yeah. So because tapeworms can be killed by the antibiotics, okay, right? Antibiotics tapeworm के ऊपर काम चलता है, right, है ना? So tapeworm is not a good option. Okay, virus and fungi are the best options, okay, right? Anyway, Anish will stop here. Meet me again. Do follow my YouTube lectures, okay, right? And best thing is that join the Plus program. इससे बहुत फायदा, okay, right? है ना? So bye bye. Take care. We'll meet in the next in the following week. देखो Tuesday is a YouTube class, okay, right, है ना? So do join me on Tuesday. इस chapter को we will actually continue with the tissues and we'll do some more NSGS MCQ, okay? चलो, bye bye. When is another lecture? Tuesday. Tuesday 8:15 p.m. Okay? All right. Bye bye, Anish. Take care. Okay. Good night.